So dear students, now we will evaluate the integrals. Exercise number 3.3 and its question number is 9. And the question is evaluate the following integrals. So let us start the work. Question number 9, exercise number 3.3. Question is integral of one divided by 1 plus x square or raised to the power 3 divided by 2 dx. हुजूर वाला हम लोगों ने क्योंकि इस एक्सरसाइज की थ्योरी में ये पढ़ा कि हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, तो हमारा पहला स्टेप जो होता है उसमें हम एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद है इसकी शक्ल जो मिल रही है वो असल में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से मिल रही है। सो अगर मैं यहाँ पे जो x है इसको टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारा काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो देयरफॉर लेट x is equal to tangent of theta. This is our equation number 1. This is our equation number 2. Now taking differential on both sides of 2. x का डेरिवेटिव असल में 1 होता है क्योंकि डिफरेंशियल का जो फार्मूला हमारे पास, because differential of a function f of x is equal to the first derivative of the function multiply the differential of independent variable. Let us take the differential of x. x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है so it will be dx, इसका डिफरेंशियल। अब क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव है दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बन गई है। यूजिंग 1, 2 एंड 3। 1 जो है उसमें क्या था जी, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब हमारे पास जो 1 प्लस एक्स की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू जो सपोज की है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उनका स्क्वायर ले लेंगे और जो dx है इसकी जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस होल की पावर जो है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 है। अब क्या होगा जी, सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। अब क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। अब पावर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद 3 डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास a की पावर x हो और उसकी पावर y आ जाए तो इट विल बी a रेज़्ड टू द पावर x मल्टीप्लाई y। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव integral of secant square theta divided by secant cube
थीटा डी थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड बच जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा डी थीटा। एंड बिकॉज वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड theta is equal to cosine theta, so we will have here integral of cos theta d theta. Now taking the integral of cos theta, and because the integral of cos theta is sine of theta plus some constant of integration, this is the reason why we have written this thing. So अब हम लोगों ने जो काम करना है वो क्या है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो इन द फॉर्म ऑफ x था, उसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा था, तो हमारा जवाब जो है वो भी वेरिएबल x की फॉर्म में आना चाहिए था। हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज x is equal to tangent of theta, this is the equation number 2, that is tangent of theta is equal to x divided by 1। और बिकॉज हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है निकाल रहे हैं, हमें पता है कि थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री और थीटा के दरमियान में जो बेस होती है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ से जो हमारे पास डिडक्शन होती है वो ये कि परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास 1 है, सो p इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1। So now by using the Pythagoras theorem, what we will have, because we know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, and hypotenuse is equal to square root of perpendicular square plus base square. So by substituting the values of perpendicular and base, perpendicular is equal to x, so we will have here x square plus base is 1 square. So hypotenuse is equal to square root of x square plus 1. So the value of hypotenuse is square root of x square plus 1. Now we will find out the values. Here sin of theta क्या होगा हमारे पास, ये देखते हैं। Because we know that sin of theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. So because we know that it is obvious from the figure that perpendicular is equal to x, and hypotenuse is equal to square root of x square plus 1. So this is sin of theta. ये हमारे पास रिजल्ट आया। यहाँ से जो sin of theta is equal to x divided by square root of x square plus 1 है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सो जो साइन ऑफ थीटा इसकी वैल्यू आई है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज द रिजल्ट। इसी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालने का और तरीका है कि बिकॉज वी नो दैट टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो बिकॉज वी नो दैट सेकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, inserting the value of tangent here we will have here x square plus 1, this is secant of theta. We can say that secant theta is equal to 1 divided by cos of theta. So we will have here 1 divided by cos of theta is equal to square root of x square plus 1. Now because we know that if
A divided by B is equal to C divided by D. Then the reciprocal of this side, B divided by A, is equal to the reciprocal of second side, D divided by C. So we will have here cos of theta is equal to 1 divided by square root of x square plus 1. So now we know a relationship between the cos of theta and sin of theta, and that relationship is because sin of theta is equal to square root of 1 minus cos square theta. How? Because sin square theta is equal to 1 minus cos square थीटा. और ये जो चीज़ हम डिड्यूस करते हैं, ये यहाँ से डिड्यूस करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इस आइडेंटिटी से हम लोग ये आइडेंटिटी डिड्यूस करते हैं, और फिर यहाँ से दोनों साइडों का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 x square plus 1 whole square, because we know that cos of theta is equal to 1 divided by square root of x square plus 1. From here we will have 1 minus 1 divided by x square plus 1. Now taking the LCM, we will have here x square plus 1, x square plus 1 minus 1 square root. Here we will write sin of theta. Sin of theta. Now sin of theta is x square plus 1 minus 1 divided by x square plus 1. Now minus 1 is cancelled with this plus 1, and we will have here sin of theta is equal to square root of x square divided by square root of x square plus 1. Because we know that square root of a divided by b, and we can say that the square root of the quotient of two numbers is equal to the quotient of their square roots. So this is x, and here we will have x square plus 1 square root, and this is the value of sin of theta. So substitute this value in place of sin of theta here, so we will have the final form. So there are two methods to find out the value of sin of theta. तो जो आपको कन्वीनियंट लगा वो मेथड आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर. नाउ exercise number 3.3 and the question number 10. Question number 10, exercise number 3.3, integral of 1 divided by 1 plus x square tangent inverse of x dx. So, क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है, सो let us start the work. First of all हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी न्यू वेरिएबल के बराबर. सो लेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. टेकिंग differential on both sides of equation number 2. Because we know that the differential of a function f of x is equal to the first derivative of the function multiply the differential of the independent variable. So जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशियल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे. तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और ये इसके डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, साथ इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा du.
and this is the equation number 3. Now using equation number 1, 2 and 3, we have integral of 1 divided by 1 plus x square tangent inverse of x dx. Can we write it like this, like 1 divided by tangent inverse of x multiplied with 1 divided by 1 plus x square dx. So now by substituting the values, 1 divided by, from equation number 2, tangent inverse of x is equal to u, multiplied with, from equation number 3, 1 divided by 1 plus x square dx is du. Now because we know that integral of 1 divided by x dx is ln of x plus some constant of integration, ln of u plus some constant of integration is the result. Because we know that u is tangent inverse of x, so therefore ln of tangent inverse of x plus some constant of integration is the result. Second method to do this question is integral of 1 divided by 1 plus x square tangent inverse of x dx. We can write it like this: 1 divided by tangent inverse of x multiplied with 1 plus 1 divided by 1 plus x square dx. Tangent inverse of x whole raised to the power -1. जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी होल पावर का साइन -1 हो जाएगा. So it is multiplied with 1 divided by 1 plus x square dx. Now because we have a formula that if the reciprocal of a function is multiplied with this first derivative, then the integral of such a combination is ln of f of x plus some constant of integration. यहाँ पे जो हमारा f of x है वो tangent inverse of x है, and this is the first derivative of this function. So therefore the final form of this integral will be ln of tangent inverse of x plus some constant of integration. Question number 11, exercise number 3.3. 1 plus x divided by 1 minus x. Solution. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंटीग्रल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशंस करेंगे. 1 प्लस एक्स को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 प्लस एक्स से और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एक्स डी एक्स. यहाँ पे हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा. साथ ही मैं स्क्वायर रूट को जो है वो सेपरेट भी कर दूंगा. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और रिजल्ट यूज किया है कि the square root of the quotient of two numbers is equal to the quotient of their square roots. So now we will have here 1 is square minus
x square dx. So we will have here 1 plus x divided by square root of 1 minus x square dx. हम लोग 1 को भी इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे और x को भी इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब इंटीग्रल दोनों पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रल है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx is equal to sine inverse of x plus some constant of integration. So यहाँ पे हम लिखेंगे sine inverse of x. So बाकी हम ऐसे लिखेंगे x divided by square root of 1 minus x square dx. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन स्टार है, इसके अंदर मौजूद इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करेंगे. तो स्टार से मैं आगे आपको 2 मेथड्स बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो आइए ज़रा अपने काम का आगाज करते हैं. सब्स्टिट्यूशन से फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं जी. लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इसकी शक्ल मिलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ जो है कॉस का थीटा आ जाएगा. So this is the equation number 1. Taking differential on both sides. This is the symbolical form of the word differential on the both sides of 1. So ये तो dx ही आ जाएगा क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 होता है, तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी. साइन ऑफ थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो कॉस ऑफ थीटा होता है, साथ डी थीटा आ जाएगा. बिकॉज वी नो दैट द डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई द डिफरेंशियल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन. अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ यूजिंग स्टार 1 एंड 2. अब पहले तो आप स्टार को देखें, ये है स्टार जी. तो स्टार को मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब ज़रा गौर फरमाए, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम लोग साइन ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ dx फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 इज cos of theta d theta. और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. अब क्या होगा जी आगे, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा cos theta divided by square root of 1 minus sin square theta d theta. Because we know that 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. So sin inverse of x plus integral of sin of theta cos of theta divided by square root of
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो नो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा cos of theta divided by cos of theta d theta. Cos theta is cancelled with this cos theta. Sin inverse of x plus integral of sin theta d theta. Now because we know that the integral of sin of theta, sin inverse of x plus, अब जो इसका इंटीग्रल हमारे पास वो होता है माइनस cos of x plus some constant of integration. So the result will be minus cos of theta plus some constant of integration. Now by substituting the value of cos of theta, because we know that from equation number 1 x is equal to sine of theta, this is the equation number 1, and because we also know that cos of theta is equal to square root of 1 minus sine square theta, because cos of theta या cos square theta जो है cos square theta is equal to 1 minus sine square theta, taking square root on both sides we will have this form. So now by substituting the value of sine of theta, we will have cos of theta is equal to 1 minus x square. So cos of theta is square root of 1 minus x square. Now substituting the value of cos of theta here, we will have sine inverse x minus, because here is a minus sign inside the bracket, so cos of theta is equal to square root of 1 minus x square plus some constant of integration. Because cos of theta is square root of 1 minus x square. स्टार इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया, और स्टार को इसी से आगे अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, दिस इज़ अ सेकंड मेथड। यहाँ तक तो हमें दोनों मेथड्स में करना पड़ेगा, स्टार इक्वेशन तक हम दोनों मेथड्स में आएंगे। तो सेकंड मेथड में स्टार के बाद क्या होगा, आफ्टर स्टार, because we know that sine inverse of x plus integral of x divided by square root of 1 minus x square dx, this is the equation star. Sine inverse of x plus integral of, अगर मैं ये स्क्वायर रूट जो है इसे न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x dx। अब अगर हम इस फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो माइनस 2x आना चाहिए। तो ये माइनस 2 मैंने अपने पास लेगा, मैं माइनस 2 से इसको डिवाइड भी करता हूँ। सो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसकी शक्ल ये बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x, माइनस 1/2 को बाहर लाऊंगा तो यहाँ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 minus x square whole raised to the power minus 1 divided by 2 times minus 2x dx। अब हमारे पास एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर इंटीग्रल्स। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन f ऑफ x की nth पावर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और इस कम्बिनेशन का हम लोग इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बराबर आती है f ऑफ x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant of integration. So by applying the formula, ये हमारा f of x है जिसकी पावर जो है वो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स। सो बाय अप्लाइंग द फार्मूला फाइनल फॉर्म क्या आएगी जी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर raised to the power minus 1 divided by 2 plus 1 divided by 1 minus 1 divided by 2 plus 1 plus some constant of integration. This is equal to sine inverse of x minus 1 divided by 2 1 minus x square whole raised to the power 1 divided by 2 divided by 1 divided by 2 plus some constant of integration. 1 divided by 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये कैसे आया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 में जब हम 1 ऐड करते हैं एल्शियम 2 आ गया माइनस 1 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई 2 सो 1 में लिख दिया। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इस 1 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल फॉर्म आएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज़्ड टू द पावर 1 divided by 2 plus some constant of integration, and this will be sine inverse of x square root plus some constant of integration. So this is your answer. Question number 12. Exercise number 3.3. Integral of sine of theta divided by 1 plus cos square theta d theta. Solution. Substitution करेंगे जी. Let cos of theta is equal to x. This is the equation number 2. Taking differential on both sides, we have because differential of a function f of x बराबर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई dx. सो यहाँ पे जो कॉस का डेरिवेटिव है हमारे पास वो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साथ डी थीटा आ जाएगा और यहाँ पे dx. थोड़ी सी और मज़ीद हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. ये जो हमारे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा इसको उठा के इक्वेशन के स्टार्ट पे लें और dx को स्टार्ट पे ले लें, तो डी माइनस dx इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डी थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. Using 1, 2 and 3, we have integral of sine of theta divided by 1 plus cos square theta d theta is equal to. अब उजरे वाला हमारे पास जो 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा है हमने इसको x कह दिया था. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. कॉज ऑफ थीटा की जगह हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो हमारे पास साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दिस इज इक्वल टू माइनस dx, और यहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. माइनस का साइन हम लोग बाहर निकाल देते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 1 plus x square dx, and because we know that जो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 plus x square dx है, it is equal to tangent inverse of x. So minus tangent inverse of x plus some constant of integration, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा. अब हमें ये पता है कि जो x की वैल्यू थी that was cos of theta from equation number
2 minus tangent inverse of cos of theta plus some constant of integration is the final form. لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله